डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? वो क्या इतना बड़ा? वेलकम मेरे डियर स्टूडेंट्स टू ASRARIANOTES कोचिंग क्लासेस या सीरीज में डॉक्टर इमरान। चलिए बेटा, आज अपन पढ़ेंगे बेसिक सेल यूनिट। Cell is the basic and fundamental unit of the living organism. Cell is the structural and functional unit of all living organisms. Right? There are two types of cells: prokaryotic cell and eukaryotic cell. Who discovered cell? Robert Hooke discovered the cell, but he discovered the dead cell. He observed only the cell walls without any protoplasm. Right? He observed the dead cell in the bark of oak tree, and the cell walls had given the appearance of honeycomb appearance. Then, so he observed only the cell walls without any protoplasm. Robert Hooke discovered the cell, that is dead cell. Then who discovered the living cell? Anthony von Leeuwenhoek discovered the living cell, that is bacteria, and he named them as animalcules. Then, so there are two types of cells: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Karyo माने nucleus, pro माने पहले, eu माने true. Eukaryotic cell where there are presence of true nucleus, right? Means nucleus is made up of chromatin material, contains chromatin material into the chromosomes, and that nucleus is surrounded by nuclear membrane. But whereas prokaryotic cell means no true nucleus, nuclear membranes are absent, so the chromatin material is dispersed in a circular form, and that is called as naked chromatin material, made up of DNA, naked DNA, right? That is called as nucleoid or genome. Then examples are mononuclear kingdom bacteria. The cell wall of the bacteria is made up of peptidoglycan layer or murin, and mycoplasma are the pleuropneumonia-like organisms, are the smallest living cell known till date. And mycoplasma lacks cell wall. Cell wall is absent in mycoplasma, right? So they can survive without oxygen also. The eukaryotic cells, fungi, cell wall is made up of chitin, plant cell and animal cell, right? Plant cell, the cell wall of plant cell shows cellulose, pectin, hemocellulose, right? Animal cell wall is absent in the animals, right? So chloroplasts, plastids are present in the plant cell, but whereas absent in the animal cell. Centrioles are present in the animal cell, whereas absent in the plant cell. And in the plant cell, almost lysosomes are absent, right? But lysosomes are present in the animal cell, and lysosomes are the single membrane bound organelle. They are rich in the hydrolytic enzymes, right, which digest the cells: hydrolases, caspases, proteases, lipases, etc., etc. The lysosomes are the single membrane bound organelle rich in hydrolytic enzyme, and they are called lysocidal bags. They causes autolysis of the dead cell and damaged cells. Many small vacuoles are present in the animal cell, but whereas plant cell shows single large central vacuole, that central vacuole is surrounded by the membrane called as tonoblast, and that tonoblast helps in the osmoregulation. So this is all about the basic about the cell, right? Cell discovered by Robert Hooke. Bacteria, living cell discovered by Anthony von Leeuwenhoek. Mycoplasma, smallest living cell known till date. Cell wall is absent in the mycoplasma, and cell wall is absent in the animal cell. Cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan murin layer. Cell wall of the fungi is made up of chitin, and cell wall of the plant cell is made up of cellulose. Bacteria cell envelope, outer glycocalyx, middle cell wall, inner cell membrane. Outer glycocalyx may be slime layer if it is loose sheet. L for loose sheet, L for slime layer, right? If it is thick, tough, and tightly bonded, it is called as capsule. Middle cell wall is made up of murin and peptidoglycan. On gram staining, you get gram positive bacteria, gram negative bacteria. In the gram positive bacteria, the stain affects the cell wall. If cell wall consists of teichoic acid, then it shows gram positive bacteria based on the presence of teichoic acid in the cell wall. If the teichoic acid is absent in the cell wall, then it is gram negative. Inner cell membrane. This inner cell membrane of the bacteria is very much similar to the top eukaryotes. This can be asked in the examination. Inner cell membrane of the bacteria is similar to the top eukaryotes. The enfolding of the cell membrane of the bacteria into the cytoplasm is called as mesosomes. Those mesosomes are similar to the function of mitochondria of the eukaryotes. How I will tell you. Mesosomes helps in the cell wall formation. Mesosomes helps in the DNA replication, and they also helps in respiration and secretion. As the mitochondria are the sites of respiration, right? ATP powerhouses of the cell, that produces ATP. So mesosomes helps in cell wall formation, DNA replication, and respiration and secretion. So these cell envelope or cell wall of the bacteria function. They give shapes to the bacteria. They give structural support to the bacteria. They prevent desiccation. Glycocalyx prevents desiccation basically, and it prevents from bursting or collapsing of the bacteria. Based on the shape of the bacteria, there are four types: spherical shape, then they are called as coccus, singular plural cocci; rod shape, then they are called as bacillus, singular plural bacilli. If they are comma shape, then they are called as vibrio, and they are spirally coiled shape, right? Then they are called as spirillum or spirilla. Ribosomes are the non-membrane bound cell organelle. It is the only organelle which is present both in the eukaryotes and prokaryotes, right? Ribosomes are the non-membrane bound cell organelle. They are present in the prokaryotes. That too 70S type. Larger subunit is 50S, smaller subunit is 30S. Both are joined by the magnesium ion, right? This is called as 70S type of ribosomes. 70S type of ribosomes are found in the prokaryotes, as well as they are found in the chloroplast and mitochondria of the eukaryotes also, right? So the mnemonic is P for prokaryotes, C for chloroplast, and M for mitochondria. 70S type of ribosomes are present in prokaryotes, chloroplasts, and mitochondrial cell organelles of the eukaryotes, PCM, right? In the prokaryote, on a single mRNA, number of 70S ribosomes attached
and they form polyribosomes or polysome chain. The function of polysome is translation of mRNA into proteins. In the eukaryotes, we have 80s type of ribosomes. The larger subunit is 60s and the smaller subunit is 40s, both joined by magnesium ion. Here, the S is nothing but measured in Rydberg unit. S is a sedimentation coefficient. It is an indirectly a measure of density and size of ribosomes. Who discovered ribosomes, बच्चों? Ribosomes was discovered by George Palade. ठीक है? Ribosome, right? Endoplasmic reticulum, continuation of the outer nuclear membrane, right? Endoplasmic reticulum. There are rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum means ribosomes are attached to the rough endoplasmic reticulum, right? Rough endoplasmic reticulum माने क्या है इसमें? Ribosomes attached है, ठीक है? Attached ribosomes. Here no ribosomes are attached to the smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum का function क्या है बेटा? Lipid synthesis है और अपने ह्यूमन बींग्स में स्टेरॉइडल हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है? अब rough endoplasmic reticulum का function क्या है बेटा? Protein synthesis है. क्या है? Protein synthesis. क्यों? अपने को मालूम है क्योंकि ribosomes are the protein factories. तो rough endoplasmic reticulum में ribosome attached है करके protein synthesis कर रहे. Ribosomes are the protein factory. Nucleolus is called as ribosomal factory. Why beta? Because nucleolus is spherical structure present in one or two or more number in a single nucleus of the cell, right? So nucleolus is called as ribosomal factory. It produces ribosomal RNA, right? Nucleolus was discovered by whom? Fontana. Fontana discovered nucleolus. इनका स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन कैसा है बेटा? फास्फोलिपिड बाइलेयर है. क्या है सेल मेम्ब्रेन बेटा? फास्फोलिपिड बाइलेयर. मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय whom? Singer and Nicholson. Singer and Nicholson has proposed the fluid mosaic model of the cell membrane which is made up of phospholipid bilayer. Phospholipid कौन सा है बेटा सेल मेम्ब्रेन में? लेसिथिन है, राइट? बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल. फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स है. फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल इज रिस्पांसिबल ऑफ फ्लूइडिटी, राइट? इजी मूवमेंट कैसा हो रहा है देखेंगे अपन. तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर का हेड बहुत तरफ है, टेल्स बीच में है, ठीक है? अब अपने प्रोटीन से पेरिफेरल प्रोटीन से जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच रहते हैं या नहीं अटैच रहते, वो एक्ट करते हैं रिसेप्टर्स के जैसा भी एक्ट करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स. और एक इंटीग्रल प्रोटीन से जो सबमर्ज्ड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे कोई अगर ट्रांसफर करना है एक आयन को, तो ये आयन क्या करता है? इंटीग्रल प्रोटीन के एक्टिव इस पे जैसे कि रिसेप्टर साइट पे जाकर के हो जाता, फिर ये पलट जाता, फिर ये आयन अंदर आ जाता. ये इसी तरीके से हेल्प करता है, ठीक है? और दूसरा प्रोटीन है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. पूरा इधर से प्रोटीन स्टार्ट हुआ इधर तक एंड होता, पूरा क्रॉस इजीली दैट एक्ट एज चैनल. ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज चैनल. एग्जांपल एटीपी सिंथेस, सोडियम पोटेशियम पंप, राइट? 3 सोडियम and 2 potassium. This is the 3:2 coupling ratio, right? तो कपलिंग रेशियो सोडियम पोटेशियम पंप का कितना है? 3 सोडियम and 2 पोटेशियम. 3:2 is the coupling ratio. In plants, these water channels are made up of 8 different types of aquaporins. ठीक है? Membrane system made up of 4 cell organelles: endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. तो Golgi complex का फंक्शन क्या है बेटा? पैकेजिंग मटेरियल है, राइट? और Golgi complex are the important site of formation of glycolipids and glycoproteins. अब इसको कैसे याद रखते हैं आप? G for Golgi, G for glycolipids and G for glycoproteins. The important site for the formation of glycolipids and glycoproteins are Golgi complex. Their function is packaging of the materials. So endomembrane system, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles, right? चलो और एक चीज है बेटा अपने पास, और क्या है? और एक चीज माइक्रोबॉडीज. क्या है? माइक्रोबॉडीज. तो माइक्रोबॉडीज में दो चीजें हैं, एक पेरोक्सिसोम्स है और ग्लाइक्सिसोम्स है. क्या है? पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइक्सिसोम्स. Microbodies nothing but made up of peroxisomes and glycosomes, right? Mitochondria. Assertion: mitochondria is called as the powerhouses of the cell, helps in aerobic respiration. Reason: mitochondria produces ATP, right? Cellular energy carrier, energy currency of the cell, adenosine triphosphate. Hence, mitochondria is called as powerhouses of the cell. Mitochondria shows double layer mitochondrial membrane, outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane. That inner mitochondrial membrane shows foldings, finger-like foldings called as cristae, and that cristae have F0, F1 particles on it, right? So in between this outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane, we have perimitochondrial space. What we have? Perimitochondrial space. Run. Lysis पढ़े plants में पढ़े ना? Glycolysis. Glycolysis कहाँ होता बेटा? साइटोसोल में होता. कहाँ होता? साइटोसोल में होता. क्रेब्स साइकिल कहाँ होता बेटा? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम में होता. और अपन पढ़े इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ETS, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी भी बोलते हैं उसको, राइट? कहाँ होता बेटा वो? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम. दैट इज क्रिस्टे पे होता. 5 कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5. कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलते हैं अपन? NADH, डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं. डन. तो उस तरीके से सेकंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम इज कॉल्ड एज सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज. इट डज नॉट पम्प प्रोटॉन्स. पहला कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन्स पंप करता और फोर्थ कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन्स पंप करता. तो सेकंड कॉम्प्लेक्स सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज डज नॉट पंप प्रोटॉन्स. और ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर है, मैलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड. ठीक है? मैलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड. अब इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में? यूबिक्विनोन इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर व्हिच कैरीज इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3, राइट? कॉम्प्लेक्स 3 को क्या बोलते हैं अपन? साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज बोलते हैं.
तो cytochrome C is a mobile electron carrier between the complex 3 and 4. ये पूछ सकता बेटा. Mobile electron carrier between the complexes 1 and 3 of the electron transport chain system is ubiquinone, and mobile electron carrier between the complexes 3 and 4 of the electron transport chain system is cytochrome C. Right? Complex 5 is called as ATP synthase, consisting of F0 and F1 particle. In the F1 area, we produces ATP. Right? So this is all about the mitochondria and the electron transport chain system. Cell brain. Why? Because it controls all the other cell organelle functions, right? So nucleus को कौन discovered करा बेटा? Nucleus was discovered by Robert Brown. Cell was discovered by Robert Hooke. Nucleus was discovered by Robert Brown. Brown ends with N for nucleus, right? So nucleus कैसा है बेटा? Nucleus are circular thing present in the cell of the living organisms, right? So it is also called as cell brain. Then nucleus shows central nucleoplasm with the right coiled DNA chromosomal material called as chromatin material. Right, that chromatin material, chromatin name was given by Fleming, right? And the nucleoplasm of the nucleus shows one or two or more circular things called as nucleolus. Nucleolus was discovered by Fontana, and it is a ribosomal factory. Why? Because the nucleolus is an important site for the formation of ribosomal RNA, right? So nucleus surrounded by double-layered nuclear membrane, outer nuclear membrane, inner nuclear membrane. At some sites, outer and inner nuclear membrane fuse with each other, leaving the gaps or pores called as nuclear pores for the movement of the protein molecules, right, and RNA molecules. So in between the outer nuclear and inner nuclear membrane, we have a perinuclear space filled with the fluid that is size of 10 to 50 nanometer. We can see the outer nuclear membrane continue as the endoplasmic reticulum, and endoplasmic reticulum shows attached ribosomes within. So it is a rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum produces proteins, right? It causes protein synthesis. So this condensed chromatin material forms chromosomes, right? Just before the cell division. So chromosomes consisting of genetic material DNA. So DNA wraps the 8 histone proteins and one single DNA linker togetherly forms an histone aptamer called as nucleosome. Yes, beta. Chromosomes, right? Chromosomes, we can study the condensed chromatin material as chromosomes. Chromosome shows primary constriction, right? That primary constriction divides the chromosomal arms. That is called as centromere. What it is called as? Centromere. Primary constriction is called as centromere, dividing the arms of the chromosomes, right? Based on the position of the centromere, monocentric chromosomes are divided into 4 types. How many types, beta? 4 types. First is metacentric chromosome, where the centromere is present in the center, dividing the arms into 2 equal arms, right? Metacentric chromosome ka diagram hai. So during the anaphase of the cell cycle, we can see metacentric chromosome as V shape, right? And some metacentric chromosome as L shape, one longer and one shorter arm. Acrocentric chromosome as J shape, one very much longer and one very much shorter arm, right? Telocentric chromosome is I shape. Only tip of the chromosome we can find the centromere. So metacentric, central centromere, V shape, submetacentric, L shape, acrocentric, J shape, and telocentric, I shape during the anaphase of the cell cycle. Let us study the structure of metacentric chromosome, right? So in the center, primary constriction is called as centromere, dividing the 2 equal arms of the chromosomes. And either sides of this centromere, we have disc-shaped structures. We have disc-shaped structures on either sides of the centromere. These disc-shaped structures on either side of the centromere is called as kinetodesmata. Kinetodesmata or kinetochores. Kinetodesmata or kinetochore, right? क्या होता है बेटा यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जब सेल डिवीजन के लिए होते हैं ना, सेपरेट करना रहता है अपने को सिस्टर क्रोमैटिड्स को, होमोलोगस पेयर्स को, तो काइनेटोकोर्स पे वो लोग स्पिंडल फाइबर्स आकर के बाइंड करके अपोजिट पोल्स पे लेके जाते हैं, ठीक है? तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर and other side of the disc shaped structures called as kinetochores or kinetodesmata. In some of the metacentric chromosome, we can also see secondary constriction. That shows secondary constriction that is non-stainable. This primary constriction centromere was stainable, but this secondary constriction is non-stainable. Non-stainable secondary constrictions gives the terminal fragment of the metacentric chromosome. That terminal fragment of the metacentric chromosome is called as satellite, and those chromosomes are called as satellite chromosomes. So those chromosomes are called as satellite chromosomes. In some of the metacentric chromosome, along with the primary stainable constriction centromere, we can find another secondary non-stainable constriction at the tip of the arms, right, separating the terminal fragments. Those terminal fragments are called as satellite, and the chromosome, metacentric chromosome, along with that satellite, are called as satellitic chromosomes. Cell cycle in the plants is 16 hours, but whereas in animals and our human beings 24 hours, right? Cell cycle divided into 2 phases, interphase and cell division. The cell division is only about 1 hour, only 5 to 10% of the cell cycle duration only. Remaining 90 to 95% of the cell cycle duration is interphase. We call interphase as a resting phase, but it is not a resting phase. Why? Because the cell is getting ready for the cell division. They are divided into 3 phases: G1 phase, S phase, G2 phase, right? After mitosis or meiosis, right? The next phase of the cell cycle is G1 phase. In the G1 phase, proteins are made, right? Cell growth increases in size,
getting ready for the division. In the S phase, DNA synthesis or DNA replication takes place. Very much important point here. DNA synthesis, DNA replication takes place in the S phase, synthetic phase of the interphase of the cell cycle, right? In the nucleus, DNA replication, DNA synthesis takes place. In the cytoplasm, centrioles duplication takes place. Why? Because it forms a spindle apparatus in the cell cycle. G2 phase, right? After G2 phase, again cell cycle repeats, undergoing the cell division, mitosis or meiosis. Mitosis is called as equational division, right? Why? Because number of chromosomes remains same in the parents as well as daughter cells. Meiosis is divided into two stages, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is the male reduction division, right? Because the chromosomal numbers are reduced here. So meiosis 1 shows prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Meiosis 2 is similar as mitosis. As we can see, the cell division is divided into two stages. First, nucleus divides, karyokinesis, then cytoplasm divides, cytokinesis. Karyokinesis stages are 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. In the chronological order, कैसा याद रखना है बेटा आपको सीक्वेंस में? अपने को वीवो प्रो कबड्डी लीग बोलकर क्या आता ना अपने स्टार स्पोर्ट्स पे, तो वो कबड्डी पहले ग्राउंड पे खेलते थे, अपन मिट्टी पे खेलते थे अपने इंडिया में, लेकिन आप कैसा हो रहा जबरदस्त एक फ्लोरिश मैट पे खेल रहे हैं, राइट? तो प्रो मैट इज द निमोनिक. प्रोफेज, M for metaphase, A for anaphase and T for telophase. Promat are the 4 stages of the cell division. Either it is mitosis or meiosis, right? बेटा मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म होती है, क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेंटर में एक जगह आ जाते हैं. एनाफेज में अपने को स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स, राइट? डिस्पैच स्ट्रक्चर्स आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर, राइट? तो लोग खींचते हैं अपोजिट पोल्स में. तो अपने को एनाफेज में V शेप, L शेप, J शेप, I शेप के बेटा मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स दिखते हैं अपने को, ठीक है? चलो, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. द निमोनिक ऑफ दिस स्टेजेस इज प्रोमैट. अब meiosis 1 में आ जाएंगे अपन, तो meiosis 1 का प्रोफेज 1 बहुत लॉन्गर रहता है. एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन इज meiosis 1. प्रोफेज 1 के भी स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है. उसका निमोनिक क्या है बेटा? लेजी पैड. क्या निमोनिक है उसका? लेजी पैड. लेक्टोटीन, Z zygotin, PA पैकेटीन, देन D फॉर डिप्लोटीन एंड D फॉर डायकिनेसिस. तो पैकेटीन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. क्यों है बेटा पैकेटीन इंपॉर्टेंट? क्योंकि पैकेटीन में ही एक्स शेप कयास्मेटा फॉर्म होता है कंप्लीटली. एक्स शेप कयास्मेटा कंप्लीटली फॉर्म होता है पैकेटीन में, और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर होके रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. Genetic recombination nodule is formed in the packetine, right? Packetine is the substage of prophase 1 of meiosis 1, where there is complete formation of X-shaped chiasmata leading to the crossing over, exchange of the genetic material, leading to the formation of the genetic recombination nodule. पैकेटीन में, ठीक है? डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन भी एक इंपॉर्टेंट सबस्टेज है प्रोफेज 1 का. मैं आगे बताता हूं आपको. अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरफेस के अंदर एस फेज में डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन होता. 4 स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस और मेयोसिस क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. निमोनिक इज प्रोमैट. मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म होता है, एनाफेज में V, L, J, I शेप के अपने को क्रोमोसोम्स दिखते हैं. और मेयोसिस रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में, पैरेंट सेल के उतार. मेयोसिस 1 एक्चुअली रिडक्शन डिवीजन है. मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस है: लेजी पैड, लेप्टोटीन, zygotin, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस. पैकेटीन में कंप्लीटली एक्स शेप कैस्मेटा फॉर्म होता, लीडिंग टू द क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. ये आपको इंपॉर्टेंट है ये स्टेज पे. और एक G0 क्विसेंट फेज है, जो सेल डिवीजन के बाद थोड़े सेल क्या करते हैं, जाके वहां पे इनएक्टिव हो जाते हैं. जब आपको रिक्वायरमेंट रहता है, अगर आपको इंजुरी हुई तो आपको सेल को रीजनरेट करना है, तो वो टाइम पे G0 क्विसेंट फेज से सेल निकल के आते हैं, फिर G1 फेज में इंटर हो जाता. वो फेज को बोलते हैं अपन G0 क्विसेंट फेज, ठीक है? इसमें कि सेल इनएक्टिव रहता. Meiosis occurs in post pubertal testis. Males में puberty reach होने के बाद ही testis में meiosis होता, ठीक है? Post pubertal testis, that is called as spermatogenesis. Production of sperms by meiosis, ठीक है? 74 days लगते बेटा completion of the process of spermatogenesis. 74 days. What is the ratio? अगर आप spermatogenesis फॉर्म कर रहे हैं from the spermatogonia, right? Primary spermatocytes, तो कितने sperms फॉर्म हो रहे? 4 sperms फॉर्म हो रहे. तो ratio is 1:4 because meiosis reduction division में final product क्या रहता बेटा? 4 cells फॉर्म होते हैं. 4 haploid cells formed from this single diploid parent cell. तो spermatogenesis males में 1:4 ratio है उसका, लेकिन meiosis occurring in the ovaries is called as oogenesis, production of ovum, ova, secondary oocyte, right? That secondary oocyte production is called as oogenesis. oogenesis में ratio कितना है बेटा? 1:1 है, क्योंकि एक parent spermatogonia spermatocyte से 4 sperms फॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे एक parent oogonia primary oocyte से एक ओवम फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसको 1:1 रेशियो है oogenesis में, ठीक है? meiosis in the ovaries leads to the formation of ovum is called as oogenesis. meiosis 1 begins before birth. अपने मेल्स में प्यूबर्टी रीच होने के बाद होते टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस meiosis, लेकिन फीमेल्स में meiosis पैदा होने से पहले ही मां के पेट में रहे जब इन यूट्रो हो गया था, और वो meiosis 1 gets arrested. meiosis 1 gets arrested at the prophase 1 diplotin stage. मैं आपको बोला ना डिप्लोटिन स्टेज भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बता दूं. ये है वो क्या है? meiosis 1 gets arrested in the prophase 1 of diplotin stage in utero, right? Till puberty is reached. अगर puberty reach हो गई, LH हार्मोन रिलीज हो गया, LH पीक के बाद ओव्यूलेशन हो गया, puberty के बाद meiosis 1 completes होता. तो meiosis 1 completes after puberty, LH in female, releasing the first polar body. meiosis 2 completes after fertilization, that is male spermatozoa, female ovum मिलकर के जब zygote form होते हैं fertilization पे, that zygote formation or after fertilization, meiosis 2 completes and releases the second polar body and leads to the formation of ovum, ठीक है? अब यहाँ पे fertilization है बेटा. तो fertilization क्या है बेटा? Most common site for fertilization.
फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है मोस्ट कॉमनली? मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये था बेटा आपका जनरल। यस बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन 74 डेज इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, spermatogonia will develop into primary spermatocyte. This primary spermatocyte is the largest sex cell in our human body, right? This primary spermatocyte undergoes meiosis 1 and forms 2 secondary spermatocytes. So meiosis 1 is undergoing by primary spermatocyte. These 2 secondary spermatocytes undergoes meiosis 2 and they form 4 spherical structures called as spermatids, right? So meiosis 2 is undergoing by secondary spermatocytes. Primary spermatocytes undergoes meiosis 1, secondary spermatocytes undergoes meiosis 2 and form 4 spermatids, right? Now these spherical 4 spermatids are modified into spermatozoa with the structure head, neck, middle piece and tail. That transformation of the spherical spermatids into these normal spermatozoa is called as spermiogenesis. These spermatozoa heads are embedded in the Sertoli cells, right? Sertoli cells are nothing but nurse cells. They help in nourishment of the sperms, right? So those heads of the spermatozoa from the Sertoli cells gets released freely as free sperms, right? That releasement of the spermatozoa head from the Sertoli cells is called as spermiation. This whole process is called as spermatogenesis. Transformation of spherical spermatids into normal spermatozoa is spermiogenesis. Releasement of the heads of the spermatozoa from the Sertoli cells is called as spermiation. Sertoli cells are the nurse cells which nourishes the sperms, right? Another important cells in the testes of the human beings is Leydig cells, interstitial cells of Leydig. Leydig cells secretes androgens, that is testosterone. Done. चलिए, ये था आपका spermatogenesis. oogenesis कहेंगे बेटा oogonia, production of oocytes in the female genital tract. Oogonia modified into primary oocyte, that is largest sex cell. Basically primary gametocyte, either primary spermatocyte in male or primary oocyte in female are the largest sex cell in the human body, right? So primary oocyte undergoes meiosis 1 in utero only before birth in the womb of mother, and that meiosis 1 gets arrested in the prophase 1 diplotin stage. Which stage? Prophase 1 diplotin stage till the puberty. When puberty reaches, LH surge occurs. After LH surge, LH peak, ovulation occurs. That meiosis 1 gets completed, right? The primary oocyte undergoes meiosis 1 and forms secondary oocyte, and first polar body is released after puberty, after ovulation. Secondary oocyte undergoes meiosis 2 and forms mature oocyte or ovum and releases second polar body. That meiosis 2 gets arrested in metaphase 2 till fertilization. ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद अगर fertilization हुआ, zygote form हुआ, तभी meiosis 2 कंप्लीट होता और mature oocyte ओवम रिलीज होता। ठीक है, अगर fertilization नहीं हुआ, ओव्यूलेशन होकर खाली ऐसे ही चले गए, तो secondary oocyte meiosis 2 को कंप्लीट नहीं करता। ठीक है, सो कितना ओवम मिल रहा है अपने को? सिंगल हैप्लॉइड गामेट ovum X cell is getting from the one primary oocyte, so the ratio is 1:1. But whereas in the spermatogenesis the ratio is 1:4. From one primary spermatocyte we get 4 spermatozoa. Spermatozoa का स्ट्रक्चर कैसा है? Spermatozoa is made up of head. The tip of the head is surrounded by acrosome. क्या? Head is followed by neck, neck is followed by middle piece, and middle piece is followed by a tail. That middle piece consists of mitochondria, which gives energy for the sperms for the motility in the female genital tract. ठीक है, अभी स्पर्म्स जो फॉर्म हुए कहां पे फॉर्म हो रहे बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्म हो रहा है। उसका पैसेज देख लेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटा टेस्टिस में जाता, रीटा टेस्टिस से वासा एफेरेंशिया में जाता, वासा एफेरेंशिया से एपिडाइडर्मिस में जाता, एपिडाइडर्मिस से वासा डेफरेंस में जाता। ये वासा डेफरेंस अपने सेमिनल वेसिकल से मिल करके एजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करता, जो कि यूरेथ्रा में ओपन होकर के मियोटस से एक्सटर्नली ओपन होता। तो कैसे क्या करना है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीटा टेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, एपिडाइडर्मिस एंड वासा डेफरेंस। ठीक है, ये आपका स्पर्म का पैसेज है। डन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म ट्रैवल करके जाता। मोटिलिटी के लिए एनर्जी कौन देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन दी मिडल पीस। ठीक है, और वो जो स्पर्म्स है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, स्पर्म्स इन दी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स जाता तो स्पर्म्स के अंदर कुछ चेंजेस आते, वो चेंजेस को बोलते हैं अपन कंपैक्शन। क्या बोलते हैं? कंपैक्शन। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट some changes occurs in the spermatozoa for the easy motility in the female genital tract, right? That changes is called as compaction. menstrual cycle average 28 days होते हैं नॉर्मल फीमेल्स में। ठीक है बेटा, 4 स्टेजेस है उसके। एक है menstrual phase, और दूसरा है follicular phase, और तीसरा है ovulation phase, ovulation, right? और उसका फोर्थ वाला है luteal phase। अब इसका निमोनिक कैसा याद रखेंगे आप? सीक्वेंशियल ऑर्डर में मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस का। मेन फूल, फीमेल्स क्या करते हैं? मेन लोगों को फूल बना देते हैं अगर कुछ पूछे तो। अब जितने भी मेन से समझ जाओ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड लुटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 0 to 5 डेज तक रहता, राइट? फिर लुटियल फॉलिकुलर फेज 6 डेज to 13 डेज तक रहता। और जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन माने रिलीजिंग ऑफ द मैच्योर oocyte or ovum from the Graafian follicle in the ovary is called as ovulation। और वो ओव्यूलेशन कब हो रहा बेटा? डे 14 में हो रहा।
राइट, वेरी मच इंपॉर्टेंट. मिड डे साइकिल, ओव्यूलेशन occurs in the day 14, राइट. उसके बाद ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज कब से कब तक है ना बेटा? डे 15 से लेके डे 28 तक है. डन. अब ये ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं इसको? जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओवम रिलीज कर देगा ग्राफियन फॉलिकल. नाउ दैट ग्राफियन फॉलिकल विल बिकम येलो कलर बॉडी. That yellow color body is called as corpus luteum. That yellow color body is called as corpus luteum. Corpus luteum का फंक्शन क्या है बेटा? Corpus luteum will secrete progesterone hormone to maintain the pregnancy. अगर fertilization नहीं हुआ, pregnancy maintain नहीं हुई, तो after 28 days that corpus luteum will become white color body called as corpus albicans. Called as corpus albicans and they get released out. Done. ये था आपका जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल. अभी आपका देखेंगे यहाँ पे डे 0 है, राइट, और ये आपका डे 28 है मेंस्ट्रुअल साइकिल का. तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा? डे 0 से डे 5 तक ब्लीडिंग हो रही, राइट. क्या हो रही बेटा? डे 0 से डे 5 तक ब्लीडिंग हो रही. डे 0 से डे 5 तक क्या हो रहा? ब्लीडिंग हो रही, राइट. डे 0 से डे 5 तक क्या हो रहा? ब्लीडिंग हो रही. और डे 5 से डे 13 तक क्या है? फॉलिकुलर थ्रेड्स, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे. और ये जो डे 14 है, ये डे 14 में क्या हो रहा बेटा? ओव्यूलेशन हो रहा, रिलीजमेंट ऑफ द ओवम और विचिक फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, राइट. देन उसके बाद कार्पस लुटियम, यहाँ पे कार्पस लुटियम फॉर्म हो रहा. ठीक है. ये ओव्यूलेशन क्यों हो रहा? बिकॉज ओव्यूलेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द हार्मोन. वो कौन सा हार्मोन है अभी देखेंगे अपन. या जस्ट 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन एलएच हार्मोन का सर्ज होता, सडन इंक्रीज आता है एलएच हार्मोन. और 12 आवर्स जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन एलएच पीक हो जाता, पीक लेवल पे चला जाता है एलएच हार्मोन. या आपका एलएच हार्मोन आ रहा है ऐसा, जस्ट 36 आवर्स में सर्ज हो रहा और जस्ट 12 आवर्स के बीच में पीक होकर ओव्यूलेशन होकर ऐसा चले जा रहा. ये कौन से हार्मोन की कर्व है बेटा? ये आपके एलएच हार्मोन की कर्व है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. यहाँ पे देखो आपका एलएच सर्ज हो रहा जो कि 36 आवर्स जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन है. ये आपका क्या है? एलएच पीक है जो कि 12 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन हो रहा. ठीक है. Yes, beta. Fertilization takes place in the ampulla of the fallopian tube where zygote is formed by the fusion of sperm and ovum, right? Single celled zygote, diploid zygote, right, divides and form 8-celled blastomere that further divides and form 16 cells morula, right? 16 cell stage is called as morula. At this morula stage, it enters the uterine cavity. क्या करता? Enters the uterine cavity. fallopian tube से uterine cavity के अंदर 16 cells stage morula से enter होता. 16 cells will become 32 cells. This 32 cell stage is called as advanced morula. क्या बोलते हैं इसको? Advanced morula बोलते हैं. ठीक है. तो कंपैक्शन अपन पढ़े थे जब स्पर्म्स फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता बिफोर फर्टिलाइजेशन इट हैज टू सर्वाइव देयर, सो सम चेंजेस अकर्स इन स्पर्म्स. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपैक्शन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट, इम्प्लांटेशन, 6th to 9th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑन एन एवरेज 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होता है. इम्प्लांटेशन माने क्या? अटैचमेंट ऑफ दिस एडवांस्ड मोरोला 32 सेल स्टेज इनटू द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. कौन सा मेट्रियम? मायो. यूट्रस वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, राइट, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग के लिए यूज होता है, लाइनिंग, एंड मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ मसल्स, राइट, smooth muscles, myometrium. The attachment of advanced morula 32 cell stage into the myometrium of the uterus by chorionic villi, that process is called as implantation. Implantation occurs at the 7th day of fertilization, on an average 6 to 9 day. Gastrulation process किसको बोलते हैं बेटा? Formation of the 3 germ layers, that is endoderm, mesoderm and ectoderm from the epiblast cells of the inner cell mass is called as gastrulation. अपन पढ़े ना, triploblastic 2 germ layers, ectoderm, endoderm, linear ctenophora में mesoglea है, mesoderm में रहता है. Triploblastic mesoderm resulted in structural complexity, right? So 3 germ layers, endoderm, mesoderm, ectoderm are coming from the epiblast cells. Which cells? Epiblast cells of inner cell mass. ये process को बोलते हैं अपन gastrulation, right? जब प्रेगनेंसी रहेगी तो अमेरिकन कॉर्ड फॉर्म रहेगा. अमेरिकन कॉर्ड कनेक्ट्स द प्लेसेंटा एंड फीटस. ठीक है. तो प्लेसेंटा और फीटस को कौन कनेक्ट कर रहे हैं? अमेरिकन कॉर्ड कनेक्ट कर रहा. प्लेसेंटल हार्मोन्स रिलीज करता, राइट. क्या क्या हार्मोन्स है वे? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, राइट, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन. प्लेसेंटा रिलैक्सिन भी रिलीज करता, ओवरी से भी रिलैक्सिन आते. ठीक है. तो हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा क्या क्या है? HCG, HPL, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन. Oxytocin hormone, which is released from the posterior pituitary neurohypophysis, is responsible for the fetal ejection reflex, that is parturition. Parturition को अपन क्या बोलते हैं बेटा? चाइल्ड बर्थ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ. कैसा होता है चाइल्ड बर्थ? बर्थ कैनाल. बर्थ कैनाल माने सर्विक्स प्लस वजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल. डन. तो प्रेगनेंसी के बाद as soon as the parturition, mother produces milk. That production of milk is called as lactation from the mammary glands. First milk after the pregnancy is very much thick and yellow in color. That first milk is very much important to the baby, which gives the immunity. Consists of immunoglobulin IgA. And most important है बेटा IgA. ठीक है. और that first milk को अपन क्या नाम देंगे? Colostrum. The first milk produced after the parturition, right, after the pregnancy by the mother is called as colostrum, which is thick and yellow in color, consisting of immunoglobulin A, IgA antibody, which gives immunity to the child. Then
Yes, beta. The ideal method to delay pregnancy or space the children is usage of intrauterine devices. Intrauterine devices are two types, non-medicated and medicated. Non-medicated intrauterine devices is example lipis loop. Very much important beta. हो सकता 2024 में याद रहेगा. Non-medicated intrauterine devices is lipis loop. It retards the sperm motility and it shows spermicidal effect. ठीक है, kill कर सकता sperms को. Lipis loop is a non-medicated intrauterine device. अब medicated intrauterine devices क्या क्या है? हार्मोन रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग है. क्या क्या है? हार्मोन रिलीजिंग है. देखो कॉपर में कॉपर टी, कॉपर 7 इजीली है एग्जांपल्स. और मल्टी लोड 375 कॉपर 7 में आ रहा, 375 में 7 आ रहा, तो ऐसा भी आप इजीली याद रख सकते हैं. कॉपर रिलीजिंग medicated intrauterine devices examples copper T, copper 7, multi load 375. The copper ion suppresses the motility of the sperms and fertilizing capacity of the sperms. But whereas hormone releasing intrauterine devices LNG20, all of the following are copper releasing except LNG20. Which of the following is a hormone releasing IUD LNG20? Which of the following is a non-medicated IUD lipase loop? ठीक है, hormone contraceptives OCPs are the very effective method for the contraception with lesser side effects. It is reversible. New oral contraceptive that is Saheli. It is a non-steroidal preparation prepared by the Central Drug Research Institute CDRI present in the Lucknow. It is once a week pill, right? Saheli OCP. Surgical sterilization. It is a very effective process of contraception, but it is irreversible. Vasectomy in males. In males, what we do is we cut the vas deferens and join it, right? Tubectomy, so that there is no transfer of spermatozoa. Tubectomy in the females, we just cut the fallopian tubes near the uterus and join it, right? Hysterectomy, complete removal of the uterus and fallopian tube in the females is called as hysterectomy. बोले देखो बच्चेदानी निकाल दिए बोल करके, बड़ा ऑपरेशन हुआ बच्चेदानी निकाल दिए, something like that. तो उसको बोलते हैं hysterectomy. Hystero माने uterus, removal of the uterus in the female is known as hysterectomy. Complete surgical sterilization of the female. Termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. Government of India legalized medical termination of pregnancy in 1971. It is very much safer in first trimester only. 3 महीने के अंदर अगर terminate करना है तो कर देना. Medical termination of pregnancy amendment act is passed in 2017. Physical organization starts at the submicroscopic molecular level, which together forms a cell, right? Group of cells is known as tissue. The two group of cells are same origin and same function is called as tissue. The study of tissues under the microscope is called as histology or microscopic anatomy or microanatomy, right? Noll and Ruska are the scientists who invented the electron microscope. Schleiden and Schwann, the botanist and zoologist, Schleiden and Schwann proposed the cell theory, right? Rudolf Virchow modified that cell theory. Omnis cellula, cellular, that is biogenesis, life comes from life. So what is the postulates of cell theory now? All living organisms are composed of cells and products of cells. All new cells arise from pre-existing cells. So the study of tissues is called as histology. There are 4 different types of tissues: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and neural tissue. Connective tissue is the most abundant tissue present in the human body. Yes, but epithelial tissue अगर उसका flat cell है, based on the shape of the cells, flat cell है तो squamous epithelium, cube shape है तो cuboidal epithelium, tall cells है तो columnar epithelium. Single layer है तो उसको बोलते हैं simple, अगर multi layer है उसको बोलते हैं compound. Single layer है और flat cell है तो simple squamous epithelium. Single है flat epithelium वास्ते लेता बेटा transfer of movements या diffusion के लिए या जो भी filtration के लिए. Lining of capillaries, exchange of materials in the blood, glomerulus filtration of the urine, alveoli, oxygen diffusion, carbon dioxide के लिए, ठीक है? तो simple squamous epithelium, lining of the capillaries, glomerulus, alveoli, function के base पे बेटा. Cuboidal है, ducts के linings पे रहते हैं, bile ducts, ducts of glands, PCT, DCT, proximal convoluted tubule. लेकिन proximal convoluted tubule अपने nephron में villi रहते हैं, इस वास्ते brush border appearance देते हैं. Simple cuboidal microvilli present in the proximal convoluted tubule. अगर tonsils है, simple columnar stomach और intestine में रहते हैं और cilia रहता ऊपर, तो उसको बोलते हैं simple columnar ciliated epithelium. Cilia क्या है बेटा? Motion, motility help करता है. किसके वास्ते? Bronchioles, oxygen जाना, dust particles को रोकना, fallopian tubes, sponge की motility के लिए, ovum की motility के लिए. तो simple columnar ciliated epithelium. Simple columnar ciliated epithelium is present in the bronchioles and fallopian tubes. Simple cuboidal epithelium with the brush border appearance, microvilli present in the proximal convoluted tubule, and simple squamous epithelium linings of the capillaries, glomerulus and alveoli. Many layers है तो compound layer, many layers कई को रखते हैं बेटा. आप सर्दी हो रही तो आप क्या करते हैं? बनियान पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर जैकेट पहनते हैं, फिर हुडी डाल लेते हैं. प्रोटेक्टिव जितना आपका कवरिंग लेयर रहेगा उतना आपको प्रोटेक्शन रहेगा. तो मेनी लेयर्स आर कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. स्ट्रैटिफाइड मान ली केराटिन रहेगा ना, उसमें स्किन है, नेल्स है, ठीक है? कहां रहते हैं वो? स्किन्स में रहते हैं, राइट? नेल्स में रहते हैं, राइट? Compound non-keratinoid epithelium. Keratin नहीं रहता, soft रहता, buccal cavity, pharynx, right? मुलायम चीज़, vagina, right? Transitional epithelium, also known as urothelium, present in the urinary bladder. Stretchable रहता बेटा. Compound epithelium है ये, लेकिन topmost layer squamous epithelium पर रहता. जैसा बोले वैसा stretch रहता condition के base पे. तो transitional epithelium is present in urinary bladder, very much important. तो आपको याद क्या रखना है? Simple squamous function diffusion होना है, alveoli filtration होना है, glomerulus या capillaries diffusion होना है. Simple cuboidal microvilli, PCT, simple columnar ciliated bronchioles, fallopian tubes. Compound keratinized stratified epithelium, skin nails, non-stratified, non-keratinized epithelium, vagina, pharynx, ductal cavity, transitional epithelium, urinary bladder. Students, connective tissue is the most abundant tissue in the human body. It produces collagen, right? Collagen is the most abundant protein in animalia.
Rubisco is the most abundant protein in biosphere. Very much important. Okay, collagen is the most abundant protein in animalia. Rubisco is the most abundant protein in biosphere. This connective tissue is divided into three: loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. Loose connective tissue is divided again into two: areolar loose connective tissue, adipose loose connective tissue. Adipose means fat, right? Adipose means fat. It stores energy, right? What the fat does? It stores energy just below the skin in the subcutaneous tissue. Adipose loose connective tissue are of two types: brown adipose tissue, which are present in the fetus, and they shows more mitochondria. Why? Because fetus needs energy. White adipose tissue is present in the adults, right? Whereas areolar loose connective tissue consists of falling cells, fibroblast cells which produces collagen, macrophages cells which are used for phagocytosis of the dead or damaged cells. Macrophages outside the blood, if it is present in the blood, then it is monocytes. Mast cells outside the blood, when it is present in the blood, it is basophils. So mast cells secretes histamine, bradykinin, and heparin. So these are the secretions of mast cells: histamine, bradykinin, and heparin. So fibroblast cells, macrophages, and mast cells are present in the areolar loose connective tissue. Done. लूज हो गया बेटा. अब आएंगे अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में. मतलब कनेक्टिव टिश्यू डेंसली पैक्ड रहता है. क्यों? बिकॉज कोलेजन्स आर अरेंज्ड इन द बंडल्स आर इरेगुलर फैशन. अगर कोलेजन रेगुलर पैरेलल बंडल्स फॉर्म में रहा, उसको बोलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. एग्जांपल्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. वेरी मच इंपॉर्टेंट एरियास पॉइंट, राइट? Tendons and ligaments are the dense regular connective tissue. अगर fibroblast collagens irregularly dispersed है, तो dense irregular connective tissue can be seen in the dermis of the skin. Right बेटा? चलो. लूज हो गया, डेंस हो गया, बचा क्या? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू अगेन ऑफ थ्री टाइप्स: ब्लड, बोन, कार्टिलेज. अब स्पेशलाइज्ड का निमोनिक कैसा याद रखो आप? ब्लड फॉर बी फॉर बोन, सी फॉर कार्टिलेज. बीबीसी न्यूज इंटरनेशनल न्यूज चैनल है ये, बीबीसी. तो स्पेशलाइज्ड है पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट? बीबीसी, ब्लड, बोन, कार्टिलेज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ब्लड में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन नहीं रहते. ठीक है? ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज. अब कार्टिलेज consisting of collagen 2 and bone consisting of collagen type 1. देखो बेटा, बोन में ही OLD1 है, देखो, राइट? तो बोन कंसिस्टिंग ऑफ द कोलाजन टाइप 1, whereas कार्टिलेज, तो कार्टिलेज को कार्टूलेज पढ़ लो आप, तो कोलाजन टाइप 2. ऑटोमेटिकली जब बोन में कोलाजन टाइप 1 है, तो कार्टिलेज में कोलाजन टाइप 2 रहता है. ठीक है? कार्टिलेज, three types of cartilage: hyaline cartilage, elastic cartilage, white fibrous cartilage. Hyaline cartilage is the most common type of cartilage. Hyaline cartilage is the most weak cartilage. Weakest cartilage, hyaline cartilage. Commonest cartilage, hyaline cartilage. They are present in the trachea, xiphoid process, etc., right? Elastic cartilage, they are yellow in color because of the elastic fibers, right? Where are they present? They are present in the ear pinna. ये जो अपनी कान का पिन्ना है, इसमें elastic, देखो आप मुड़ा सकते हैं, जितना बोले उतना मुड़ा ले सकते हैं. इसको cartilage रहता है. कौन सा? Elastic, elasticity, right? Ear pinna. Epiglottis, eustachian tube. Eustachian tube is the connection between the pharynx and the ear, right? चिल्ड्रन के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब शॉर्ट रहती है, इस वजह से चिल्ड्रन के अंदर जल्दी इंफेक्शन होता है. थ्रोट इंफेक्शन हो या ईयर इंफेक्शन हो. और थ्रोट इंफेक्शन आपको गले आगे बोलते हैं, देखो आपको फेरेंजाइटिस होती है, टॉन्सिलाइटिस होती है, तो आपको ईयर पेन होता. क्यों होता? वो रिफर्ड पेन है बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब इज द कनेक्शन बिटवीन फेरिंक्स एंड मिडिल ईयर. तो इलास्टिक कार्टिलेज कहां रहता है बेटा? ईयर पिन्ना में, एपिग्लॉटिस में, यूस्टेशियन ट्यूब में. अब इसका निमोनिक कैसा याद रखते हैं आप? e to the power of 4. E to the power of 4. E for elastic cartilage, E for ear pinna, E for epiglottis, E for eustachian tube. ठीक है? अब white fibrous cartilage क्या है? Strongest cartilage है. Weakest cartilage, commonest cartilage, hyaline cartilage. Strongest cartilage, white fibrous cartilage. कहाँ रहता है बेटा? Pubic symphysis. टू pubic bone के बीच में जो joint है उसको pubic symphysis बोलते हैं. और intervertebral disc, दो vertebrae के बीच में joint के अंदर जो disc में रहता है, वहाँ पे white fibrous cartilage रहता है. तो white fibrous cartilage is the strongest cartilage present in the pubic symphysis and intervertebral disc. Very much important AS point. या नहीं तो most common cartilage or weakest cartilage is hyaline cartilage, right? It is also an important AS point. Elastic cartilage कहाँ रहता है? E to the power of 4. Ear pinna, epiglottis and eustachian tube. So this is all about cartilage. बोन के अंदर क्या रहता है? OLD1, कोलाजन टाइप 1 कार्टिलेज रहता है. तो बोन का एक्टिव सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, बोन के इनएक्टिव सेल्स को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं. कार्टिलेज के एक्टिव सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, इनएक्टिव सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं. तो इनएक्टिव सेल्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन, ऑस्टियोसाइट एंड कॉन्ड्रोसाइट आर प्लेस्ड इन द स्पेस सराउंडेड बाय अ स्पेस. दैट स्पेस इज कॉल्ड एज लैक्यूनाe इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. ये आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्पेस इज कॉल्ड एज लैक्यूनाe. कौन से सेल्स रहते हैं? इनएक्टिव, कॉन्ड्रोसाइट और ऑस्टियोसाइट रहते हैं. ठीक है बेटा? चलो अब आएंगे अपन ब्लड में. ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, नो कोलाजन है, नो फाइब्रोब्लास्ट है. ठीक है? तो ब्लड शोस प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल्स 45%, राइट? तो प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर रहता बेटा, और प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं. क्या क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है. क्यों बेटा? बिकॉज इट मेंटेन्स द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, राइट? Albumin maintains the colloidal osmotic pressure या oncotic pressure in the capillaries. Albumin is very much important. Globulin, alpha globulin, beta globulin, gamma globulin, वो immunity provide करता है डिफेंस में, right? Alpha globulin, beta globulin है, gamma globulin. तो वो जो gamma globulin है उसको बोलते हैं अपन immunoglobulin. क्या बोलते हैं उसको? immunoglobulin, right? कितने टाइप्स के immunoglobulin से अपने 5 टाइप्स के हैं. IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, right? ऐसा. Fibrinogen. तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? Albumins are the plasma proteins which are responsible for the maintenance of colloidal osmotic pressure, that is oncotic pressure. अब blood cells क्या क्या है? blood के platelets, thrombocytes, right? WBCs, leukocytes,
RBCs एरिथ्रोसाइट्स, RBCs एरिथ्रोसाइट्स रेड कलर के है, क्यों? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट हीमोग्लोबिन। क्या है उसके अंदर? हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, राइट? So 45% of the blood volume is occupied by the blood cells RBCs. That is called as packed cell volume or hematocrit value. Remaining 1%, which differences the upper plasma and lower packed cell volume, is white 1% buffy coat layer. That buffy coat layer is made up of WBCs, leukocytes and platelets, thrombocytes. Platelets की क्या है बेटा वैल्यू? 1.5 to 4.5, राइट? डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं 1.5 to 4.5 लैक्स पर यूनिट से, ठीक है? WBCs, leukocytes और RBCs, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं अपन। क्यों है RBC? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, रेड हीमोग्लोबिन पिगमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कनेक्टिव टिश्यू एट द मोस्ट रैपिड रिवीजन। एएस इंपॉर्टेंट प्लान क्या है? कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमलिया, रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वेस्पियर, कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट connective tissue in the animal human beings, right? Areola, loose connective tissue, fibroblasts, macrophages, mast cells. Mast cells secretes histamine, bradykinin, and heparin. Adipose, loose connective tissue, brown adipose tissue, white adipose tissue, it's a fat, stores energy. Dense, regular connective tissue, stem down ligaments, most important. Irregular dense connective tissue, dermis skin. Specialized blood bone cartilage. Weakest cartilage, most common cartilage is hyaline cartilage. Strongest cartilage is white fibrous cartilage present in the pubic symphysis and intervertebral disc. Elastic cartilage present in the external ear pinna, right? Epiglottis and eustachian tube. Eustachian tube is the connection between pharynx and middle ear, right? So e to the power of 4. Blood, plasma, blood cells, plasma protein, albumin is very much important for the maintenance of collateral osmotic pressure, that is oncotic pressure. Done beta? Chalo, agle. White blood cells, WBCs, also called as leukocytes. They are of two types, granulocytes, agranulocytes. If azurophilic granules are present in them, they are called as granulocytes. If azurophilic granules are absent, then they are called as agranulocytes. Granulocytes, leukocytes, WBCs divided into three types: neutrophils, eosinophils, and basophils. Right? Neutrophils is the most abundant WBC, nearly 60 to 70%. They are called as microscopic policemen. Why? Because they are the first to respond to the infection or inflammation, right? And they show characteristic feature 3 to 5 lobed nucleus. Neutrophils are the most abundant WBC. They are called as microscopic policemen. Why? Because they are the first to the response to the inflammation infection, 60 to 70%, and they show characteristics 3 to 5 lobed nucleus. Eosinophils को अपन क्या बोलते हैं? Acidophils भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? Eosinophils को अपन क्या बोलते हैं? Acidophils भी बोलते हैं। Eosinophils, also known as acidophils, they get increased in infections. कौन से इन्फेक्शंस में? या तो एलर्जी में, एलर्जी, या नहीं तो हेलमिंथिक इन्फेक्शन। अपन पढ़े थे ना हेलमिंथिस, राइट? राउंडवॉर्म्स, एस्कैरिस, ओकेरिया, फाइलेरियासिस। तो एलर्जिक इन्फेक्शन और हेलमिंथिक इन्फेक्शन में इओसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा? इट शोज बाइलोब न्यूक्लियस, स्पेक्टाकल, चश्मे के जैसे 2 लोब रहते हैं न्यूक्लियस में। देन बेसोफिल्स आर दी मास्ट सेल्स आउटसाइड द ब्लड। अगर ब्लड में है तो वो बेसोफिल्स है, ब्लड के बाहर चले जाएंगे। डायापेटिस बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, that is white blood cells from the blood vessels to the outside is called as diapedisis. वो movement को क्या बोलते हैं बेटा अपन? diapedisis बोलते हैं। movement of white blood cells from the blood vessels to the outside is called as diapedisis. कौन देखा? अगर basophils blood में है, WBCs blood के बाहर चले गए तो उसको क्या बोलते हैं? mast cells. mast cells क्या करते हैं? secrete करते हैं histamine, bradykinin, heparin, right? They cause inflammation. ये था बेटा आपका granulocytes. अब A granulocytes, A माने absent, right? Azurophilic granules are absent, तो A granulocytes are of two types, monocytes and lymphocytes. Monocytes are the largest WBCs. क्या है बेटा? Monocytes are the largest WBCs, right? If they are in the blood, they are called monocytes. If they show diapedisis, then they are formed macrophages outside the blood. Macrophages का फंक्शन क्या रहता है बेटा? Phagocytosis of dead and damaged cells रहता है। अब यहाँ पे आ जाएंगे अपन lymphocytes के बारे में। क्या है? Lymphocytes are of two types, T lymphocytes, B lymphocytes, right? B lymphocytes divide into plasma cells and memory cells. Memory cells, अगर कुछ infection हुआ बैक्टीरिया का या वायरस का, तो ये लोग उसको पहचान करके मेमोरी में रख लेते, right? वो memory cells further divide नहीं होते। Because of the memory cells, we get rapid secondary immune response. अगर आपको एक बार infection हो गया, suppose आपको टाइफाइड हो गया, आप अच्छे से हो गए, ट्रीटमेंट हो गया आपका, आप अच्छे हो गए, फिर चंद महीनों के बाद आपको अगर फिर से अगर टाइफाइड आया, तो आपका सेकंड रैपिड इम्यून रिस्पांस रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स। अरे ये तो टाइफाइड काजिंग बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरिया, सल्मोनेला टाइफी, तो उसको क्या करता है? नहीं रिकॉग्नाइज कर लेता मेमोरी सेल्स। तो रैपिड सेकंडरी इम्यून रिस्पांस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स एंड दिस प्लाज्मा सेल्स डिवाइड फॉर्म्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स। प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgG। ठीक है बेटा? अब आ जाएंगे टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या क्या है? टी हेल्प सेल्स, टी हेल्पर सेल्स जिसके अंदर CD4+ मार्कर्स रहते हैं, टी सेल्स which forms cytotoxic T lymphocytes जिसके अंदर CD8+ मार्कर्स रहते हैं, और TI और TS that is inhibitor or suppressor T cells, इनकी एक्टिविटीज को इन्हें इनहिबिट या सप्रेस कर देता है। अगर इसके हद से ज्यादा एक्टिविटी होगी तो उसको इनहिबिट या सप्रेस करता है, TI और TS cells। तो ये था आपका WBC leukocytes. Sphenoid bone is called as keystone bone as it attaches with all the other cranial bones in the cranium, right? Coronal suture joined between the frontal and parietal bones. This frontal and parietal bones joined by coronal suture. Lambdoid suture, lambda shape between the occipital and parietal bones. This occipital bone and this parietal bones joined by a lambdoid suture, right? Ear ossicles, each ear consists of 3 tiny bones present in the middle ear, that is malleus incus stapes. ठीक है? malleus incus stapes. Inside से outside अगर देखेंगे आप तो क्या है? निमोनिक SIM, right? malleus incus stapes, sim, right? Malleus is a modified articular
incus is a modified quadrate and stapes is a modified hyomandibular. अब इसका निमोनिक कैसे याद रखना बेटा? ma malleus modified articular ma, right? Incus I quadrate I cube and stapes s and modified hyomandibular hy, that is shy, right? अब ये माँ आई क्यू शाही क्या है निमोनिक? कोई मिल गया, सीधा ऋतिक रोशन के पास चले जाना, माँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, माँ फिर बाद में माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है माँ, राइट? तो और ऋतिक रोशन की आईक्यू जबरदस्त दिखाया उसमें जादू मिलने के बाद, और उन्हें अपनी प्रीति जिंता के साथ बड़ा शाही रहता, तो कोई मिल गया, ऋतिक रोशन को याद कर लिए तो मेलियस इंकस स्टेप्स का निमोनिक इजीली याद हो जाता। 3 tiny bones in the middle ear of the each ear, malleus incus stapes. Stapes is the smallest bone attached with the stapedius muscle is the smallest skeletal muscle, right? From inside to outside, sim stapes incus malleus. Malleus is modified articular, ma incus modified quadrate, IQ ऋतिक रोशन का IQ जबरदस्त जादू मिलने के बाद, माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है माँ, राइट? स्टेप्स मॉडिफाइड हायोमैंडिबुलर, राइट? एस पर स्टेप्स हायोमैंडिबुलर, एच वाई शाइन, कैसा रहता? प्रीति जिंता के साथ बड़ा शाइन रहता। ये था आपके ईयर ऑसिकल्स, ठीक है बेटा? अब 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है अपने रिब केज में। फर्स्ट 7 पेयर्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, दे आर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, पोस्टीरियरली वर्टिब्रो और एंटीरियर स्टर्नम से अटैच्ड डेवलप डायरेक्टली। 8 to 10 पेयर्स ऑफ रिब्स are called as vertebrochondral ribs. Why? Because 8th, 9th, 10th ribs posteriorly vertebrae से attached है, लेकिन anteriorly 7th cartilage of the ribs के साथ attached होके 7th, 8th, 9th, 10th मिलके ziphied cartilage of sternum पे join होते हैं। तो 8, 9, 10 pairs of the ribs are called as vertebrochondral ribs, but whereas 11th and 12th pairs of ribs are free floating anteriorly. Those are called as free floating ribs, and these vertebrochondral and free floating ribs together called as false ribs. ठीक है बेटा? अब joints में आएंगे। femur is the longest and strongest bone. femur माने thigh bone, ठीक है? femur माने thigh bone. Thigh bone is the longest and strongest bone in the human body, right? Pivot joint, joint between the first cervical vertebrae atlas and second cervical vertebrae axis. ये अपना atlas है और ये अपना axis है, तो axis के उसमें atlas ऐसा movement करता। No movement can be seen with the help of atlantoaxial joint, that is pivot joint. Saddle joint, joint between the carpals and the first metacarpal of the thumb, right? Carpals and the first metacarpal of the thumb is called as saddle joint. Ball and socket joint, ball head of the humerus fits into the glenoid cavity of the pectoral girdle, forms the shoulder joint, and head of the femur will fit into the acetabulum cavity of the pelvic bone, right? And forms the hip joint. Ball and socket joint, most movable neurons are the conducting cells, structural and functional unit of nervous system. Nervous system is ectodermal in origin, and neuroglia are the supporting cells of the nervous system. We can see bipolar neuron in the retina of the eye, right? Some of the examples of neuroglia are microglia. Microglia are the mesodermal in origin, as the nervous system is ectodermal in origin, exception microglia is the mesodermal in origin, and the function of microglia is phagocytosis, right? Schwann cells in the peripheral nervous system and oligodendrocytes in the central nervous system. These Schwann cells secretes myelin sheath surrounding the axons of the neuron, right? In the myelin sheath, there are some gaps called as nodes of Ranvier. Because of that nodes of Ranvier, the conduction of action potential is faster. That is called as saltatory conduction. Nervous system is divided into central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is nothing but brain and spinal cord, but whereas peripheral nervous system is nothing but cranial nerves coming from the brain, cranium, and spinal nerves coming from the spinal cord. There are 12 pairs of cranial nerves in human beings, and there are 31 pairs of spinal nerves in our human beings. So structurally, peripheral nervous system shows cranial nerves 12 pairs, spinal nerves 31 pairs. Based on the function, peripheral nervous system is divided into two: autonomous nervous system, somatic nervous system. Somatic nervous system is voluntary; it controls the skeletal muscles, right? Autonomous nervous system is involuntary. Two types: sympathetic autonomous nervous system, parasympathetic autonomous nervous system. The main transmitter of the sympathetic nervous system is adrenaline, but whereas the main neurotransmitter of the parasympathetic nervous system is acetylcholine. Acetylcholine is the most common neurotransmitter of the chemical synapse, right? Synapse is nothing but junction between two neurons. It's called as synapse. Electric synapse, conduction, right? And gap junctions are the example of electrical synapse, which is present in the heart, right? And chemical synapse. Chemical synapse means junction between two neurons where there is a space between the two neurons known as synapse, synaptic cleft, in which neurotransmitters, chemicals like acetylcholine and adrenaline are released. So neurotransmitter of the sympathetic nervous system is adrenaline, that is involuntary, and neurotransmitter of the parasympathetic nervous system is acetylcholine. Sympathetic nervous system is fight and flight response in the stress, and parasympathetic nervous system is rest and digest response. Parasympathetic nervous system increases the peristalsis movement of the stomach and intestine, and it increases the secretion. ठीक है बेटा? Schwann cell secretes myelin sheath, and microglia, mesodermal in phagocytosis. Bipolar neuron can be seen in retina, and cranial nerves are 12 pairs, spinal nerves are 31 pairs. Sympathetic nervous system neurotransmitter is adrenaline, fight or flight response. Parasympathetic nervous system neurotransmitter is acetylcholine, rest and digest response. It's divided into forebrain, midbrain, and hindbrain. Midbrain is the smallest part of the brain. Forebrain is again divided into two parts: cerebral hemisphere, cerebrum, that is the largest part of the brain. Right cerebral hemispheres, left cerebral hemispheres. Both are internally connected by the transverse wide bands of the nerve fibers called as corpus callosum. Very much important AS point. Right cerebral and left cerebral hemispheres are joined with the transverse wide band of nerve fibers called as corpus callosum. Density line shows thalamus and hypothalamus. Thalamus is a coordinating center, that is relay station for sensory and motor impulses. Hypothalamus, right? Hypothalamus
controls the pituitary gland. Hypothalamus, hippocampus, and amygdala. These three things. Hypothalamus, hippocampus, and amygdala. Hypothalamus, hippocampus, and amygdala. These three things forms the limbic system. Limbic system is responsible for the sexual behavior and emotions. Midbrain is the smallest part of the brain, consisting of 4 optic lobes, corpora, quadragemina. Superior optic lobes are large, helpful for vision, and inferior optic lobes are small, helpful for hearing. Right? Hindbrain shows pons, cerebellum, and medulla. Pons. P for pons, P for pneumotaxic center. Pneumotaxic center present in the pons. It alters the inspiration and regulates the respiratory rate. Right? Cerebellum is called as little brain. The white matter of the cerebellum shows trees-like appearance called as arbor vitae. And the medulla shows respiratory rhythm center, cardiovascular center, and gastroreflexes center. It controls all the vomitings, right? And cardio, heart rate, respiratory rhythm center, right? These all things are present in the medulla. Now this medulla continues as a spinal cord and moves out from the cranium skull through a large opening. That large opening is called as foramen magnum. That large opening is called as foramen magnum. Midbrain, pons, and medulla. Midbrain, pons, and medulla together forms the brain stem. Together, midbrain, pons, medulla together forms the brain stem. Corpus callosum connects right cerebral and left cerebral hemispheres. Hypothalamus, hippocampus, amygdala forms limbic system, sexual behavior, emotions. Midbrain, pons, medulla together forms brain stem. Right? All the respiratory, cardiovascular, and gastro centers are present in the medulla. Cerebellum, white matter is called as arbor vitae, and P for pons, P for pneumotaxic center alters the inspiration. अब यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? Brain coverings. The brains are covered by a protective layer called as meninges. Brain protective covering layers are called as meninges. There are 3 meninges from outside to inside. The mnemonic is DUP. छोटे रे जब आना डप्पा मार के जाना उनके पीछे मार के जाते देखो वैसा याद रखो DUP. From outside to inside. Outer dura matter, middle arachnoid matter, and inner pia matter. Right? Brain is covered by 3 protective meninges layer: dura matter, outer dura matter, middle arachnoid matter, and inner pia matter. So there is a space in between the arachnoid matter and pia matter. That space is called as subarachnoid space, consisting of cerebrospinal fluid. Consisting of cerebrospinal fluid. There are 4 ventricles in the brain which carries the cerebrospinal fluid. First ventricle in the right cerebral hemisphere, second ventricle in the left cerebral hemisphere. Those first and second ventricles are called as lateral ventricles. First and second ventricles are called as lateral ventricles. Third ventricle is present in the diencephalon. Third ventricle is called as diocele. As it is present in the diencephalon, third ventricle is called as diocele. These first and second lateral ventricles are joined to the third ventricle diocele with the help of foramen of Monro. Foramen of Monro. ठीक है? इंटर foramen Monro. Foramen of Monro. Interventricular foramen की बोलते हैं. 2 ventricles के बीच के है बोल के interventricular foramen की बोलते हैं. लेकिन first and second ventricles called as lateral ventricles are joined to third ventricle diocele by the foramen of Monro. अब ये third ventricle of diocele will go and join with the fourth ventricle of the brain which is present in the medulla, right? Also known as myelocele. क्या बोलते हैं बेटा उसको? Also known as myelocele. अगर आप MBBS में जाएंगे तो आप वहां पे पढ़ेंगे rhomboid fossa. क्या पढ़ेंगे? Rhomboid fossa. ये आप MBBS के लिए है, लेकिन अभी नीट के लिए ये काफी है. Fourth ventricle of the brain is called as myelocele, present in the myelencephalon, that is medulla. ठीक है? The third ventricle diocele is connected to the fourth ventricle myelocele with the help of cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius, are also known as ITVR, which is present in the midbrain. ना है बेटा ये सब midbrain में है, right? Aqueduct of Sylvius or cerebral aqueduct, also known as ITVR, travels in the midbrain, which joins the third ventricle diocele of the diencephalon with the fourth ventricle myelocele of the myelencephalon medulla oblongata. ये 4 ventricles connection foramen of Monro and cerebral aqueduct important है पूछ सकता. Hypothalamus, posterior pituitary gland, neurohypophysis, secretes oxytocin, love hormone, helps in parturition, right? Uterine contraction. Vasopressin, antidiuretic hormone. That deficiency of antidiuretic hormone causes the diabetes insipidus, right? Anterior pituitary gland, adenohypophysis is the smallest endocrine gland present in the sella persica, right? Pineal gland secretes melatonin, which helps in the biological clock, sleep-wake cycle. Thyroid gland secretes thyrocalcitonin, which lowers the blood calcium level, and parathyroid gland secretes parathyroid hormone, PTH, which increases the blood calcium level, right? Hypercalcemia. Adrenal gland, adrenal cortex, adrenal medulla. Adrenal cortex secretes 2 things: glucocorticoids and mineralocorticoids. Glucocorticoids means cortisol, it is a life-saving hormone, right? And mineralocorticoid secretes aldosterone, that is reabsorption of sodium and water in the DCT. Adrenal gland medulla secretes catecholamines, that is emergency hormones: adrenaline, epinephrine, noradrenaline, norepinephrine, right? These are the fight or flight response.
In our pancreas, mixed gland, pancreatic juice can be formed in the pancreatic aciनी, and islets of Langerhans are the endocrine part of the pancreas. That islets of Langerhans shows alpha cells and beta cells. Alpha cells secretes glucagon, but whereas beta cells secretes insulin hormone. As the diabetic patients take insulin, insulin reduces the blood glucose level. The transport of the glucose via the transport of the insulin is through glucose transporter 4, GLUT4. The transport of insulin is through GLUT4. This insulin deficiency leads to diabetes mellitus, जिसको अपन बोलते हैं डीएम, शुगर, राइट. इसके अंदर क्या क्या रहता है? पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन जाते रहते हैं, पॉलीडिप्सिया, बार बार पानी पीते रहते हैं, पॉलीफेजिया, बार बार खाना खाते रहते हैं. ठीक है, तो ये डायबिटीज मेलिटस में, राइट, यूरिन में अगर प्रोटीन चले गया तो उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, और यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज चले गए तो उसको बोलते हैं कीटोनूरिया. डायबिटीज इंसिपिडस आल्सो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ज्यादा पानी पीते रहते हैं, ज्यादा यूरिन करते रहते हैं. लेकिन मेन डिफरेंस डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन वासोप्रेसिन. डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन. और डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट्स के यूरिन में प्रोटीन जाता, प्रोटीनूरिया, कीटोन बॉडीज जाती है, कीटोनूरिया, और ग्लूकोज भी जाता, ग्लाइकोजूरिया. Glycosuria going glucose in the urine, ketonuria going ketone bodies in the urine, proteinuria, excretion of the protein in the urine of the diabetic mellitus patient, and the insulin gets transported with the GLUT4 transporter. Protein hormones, peptide hormones act on membrane bound receptors, right? They form secondary messengers, that is cyclic AMP, and they alters the cellular metabolism. But whereas steroidal hormones, right, steroidal hormones, they act on nuclear receptor. They can easily pass this cell membrane, phospholipid bilayer of the cell membrane, as they are steroids. Steroidal hormone acts on nuclear receptors. They mainly acts on gene expression, right? Emphysema is the disorder of the lungs respiratory system where alveolar walls are damaged due to the smoking of tobacco, cigarette smoking. Nicotine alkaloid जो है वो damage कर देता है alveolar walls को. Hypertension is the disorder of cardiovascular system. Increased BP, systolic blood pressure by diastolic blood pressure is greater than 140/90 mm mercury Hg. It is measured by sphygmomanometer. Coronary artery disease, CAD, is nothing but atherosclerosis, right? There is a deposition of fat, calcium, cholesterol on the blood vessel walls, leading to the formation of fibrosis and clot that blocks the arteries. That is called as coronary artery disease. It can lead to the cardiac arrest, stoppage of the working of the heart because of the blockage of the arteries. There is no blood supply. Temporary sudden chest pain with less blood supply is called as angina pectoris. You know, itis माने inflammation. itis माने inflammatory infection, right? अगर वो glomerulonephritis, itis है देखो inflammation. किसका? glomerulus of the nephron. meningitis, inflammation infection है. किसका? meninges of the brain का. arthritis, arthro माने joints, right? itis, inflammation of the joints, arthritis. अगर inflammation of the joints हो रहा because of the uric acid crystals deposition, उसको बोलते हैं अपन gout. A clinical condition where there is inflammation of the joint because of the uric acid crystal deposition is called as gout. ठीक है? Myasthenia gravis is the disorder of the neuromuscular junction. It is an autoimmune disorder. muscle घास जाते हैं. Tetany is nothing but rapid muscle spasm due to low calcium level. तो ये था बेटा अपना सारा basic cells, tissues and all the human anatomy and physiology. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें. रैपिड रिवीजन के जैसा रिवाइज करके एग्जाम को जाए. इंशाल्लाह नीट यूटी 2024 5th मई के दिन अपने ही वीडियोस में से क्वेश्चन रहेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल असरारिया नोट्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें. All the NEET aspirants, all the best. Take care. Monster.